Honorable District Education Officer Vijay Khandelwal, Honorable Director General Anjaneya University Dr. P.C. Jain, Honorable Pro VC Srijan, all the faculties, all the deans, and the guests and director of filmmaking, and my dear students from the different schools. This is Srijan 3.0, a mega event that has been organized here. It is 3 days event where number of students from 80 schools will participate across the state, and most of the students are from Raipur. This mega event consists of discus throw, shot put, volleyball, kabaddi, photography, model making, robo war, debate, short film, extempore, mehendi, and singing. So today there will be 12 events parallelly organized at the different locations, and day 2 tomorrow. Basketball, javelin throw, best out of waste, best reel at archery, best business idea, rangoli, band, and fireless cooking. On the third day, painting, fashion show, face painting, dance. So, in this way, there are 24 events will be there in this Srijan 3.0. All the students, those who are participating, I heartily congratulations for participation in this event and best wishes for success for this event. I hope that you will participate with enthusiasm, and as you know that some cash prizes are good cash prizes are there, and best school presentation is also here. So you participate in all the events and get the prizes. So best wishes to all the students and the teachers, those who have come from the different schools. And so enjoy this day for the 3 days and participate with heart. So thank you all. Srijan, as its name suggests, creating something, and creativity is important in a present era. If you are creative, then only you can face the challenges of the market, because that is the demand of the hour. Host of activities are being provided which will surface your hidden talent. So, a big round of applause for yourself for participating in this event, and big round of applause for management and the coordinating team who have organized this function as such a grand function. I wish all the best for the success of this program.
मैं इस कॉलेज में पहले कई कॉलेज था, यहाँ लगभग मैं पिछले 10-12 वर्षों से आ रहा हूँ और विद्वान भैया से बहुत मतलब करीब रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं वर्षों से। ये अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है और जो बच्चे स्कूल से आए हैं, बस मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हिस्सा लीजिए। बहुत अच्छा कंपटीशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है खेलों का, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, डटके के लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ के अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आज के समय में जो नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करिए और निश्चित रूप से उसमें करियर बनाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी दुनिया अंदर से इतनी तेजी से बदल रही है कि उसका एहसास शायद हम नहीं कर पा रहे। बीच में मेरा बेटा आया हुआ था, उसने एक एग्जांपल दिया मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि जो पिक्चर बनी थी अवतार करके, अवतार पिक्चर के बता दें, उस पिक्चर को बनाने में लगभग 3 साल लगे थे और उसके पीछे 2000 लोगों की यूनिट काम कर रही थी। 3 साल में 2000 लोगों ने मिलकर उस पिक्चर को बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से वही पिक्चर 3 महीने में बन जाएगी और कुछ ही लोग लगेंगे। तो यानी आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी कितना तेजी से हमारे जीवन में बदलाव ला रही है। डॉक्टर्स जो पर्ची लिखते हैं या अपना अच्छा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डायग्नोसिस नहीं कर पाते कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अगर एआई से पूछेंगे, डालेंगे उसमें, तो वो आपकी समस्या रखेंगे, वो आपको पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस कर देगी आपको क्या समस्या क्यों हो रही है। और मेडिसिन अगर उससे मांगेंगे तो मेडिसिन बता देगी कि क्या क्या मेडिसिन आपके लिए जरूरत होगी। बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है, तो उसमें डालते हैं, अपना डिटेल डालते हैं, वो बहुत शानदार प्रोफाइल तैयार करके दे देते हैं और बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो यानी बदलाव हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही है। तो आज से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको इस चीज को समझना होगा कि अगर आपको सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको माइंडसेट चेंज करना है। उसी हिसाब से जैसे दुनिया चल रही है, बदल रही है, आपको अपनी सोच बदलनी है। On behalf of Srijan 3.0, being a coordinator of this event, I extend my heartfelt thanks to each one of you for your invaluable participation in Srijan 3.0. This event would have not been successful without the enthusiasm and commitment of the schools and teachers who guided their students through every stage. Sir, as you said that we have to motivate our students for higher education, this is one of the motive of this Region 3.0. First is to give the platform to all the school students for various creativity, various events, through these various events, so that they can showcase their talent. And secondly, the one which you have shared just now with us, to give them a glance of university and higher education prospects. Through this event, we are motivating the students, especially from the village area, from the interior areas, to go for higher education and help in the development of our country. And with this, I thank once again all the teachers and principals of schools for sending their students. And today we have on campus around 1200 and more students. So, and we are expecting some more, now big numbers tomorrow and day after tomorrow, and we are having 27 events with more than 60 judges and referees coming to this event, and more than 3,000 students participating in it. So, we wish all of us all the best for the day, and thank you to each and everyone present here. Thank you so much.
है